ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो।
warm welcome to everyone and toss won by Hustlers and opted to bowl first. And the two openers for Kings, Yogesh Naik and Shailendra, right on the batting crease. Sandesh Gaonkar and Prashant Patil, the two officials for this wonderful match. Late Ferdinand Coelho Memorial Veterans Members League 2023, and the field is set. The batters are ready as well. Shailendra on the striking position. On second end is Yogesh Naik. On the bowling mark is Dr. Syed Sarfaraz. From the far end. Are you ready? And let's play. Will be the call in a while. Here comes the first delivery. The ball kept low. Good delivery to start with from Dr. Sarfaraz. Still the adjustments in the field. One more in the gully, in the point. Oh, good looking drive, and the first runs on the board from Shailendra. He gets off the mark, played straight to the deep sweeper cover. Full face of the bat, leaning towards the ball and good body behind. Technically so good Shailendra. Trying to give a good start to the team Kings. Oh, this will be wonderful left hand right hand combination. Yogesh Naik, left handed batting sensation. And a very good morning to all the spectators joining us live through YouTube Goa Livecast and the present audience here on the ground. A warm welcome and have a blessed day today, full of entertainment, full of actions on this beautiful ground, MCC. Lovely drive, good footwork there from Sarfaraz. Sometimes playing football also helps in the game of cricket. This is one good example of that. We always talk about the good eye-hand coordination, but wonderful eye-leg coordination from the bowler, Sarfaraz. Lovely drive. This time he gets off the mark with a single. Straight away on the go. Yogesh Naik, that shows the confidence in this batter. Both the batters are off the mark with single each to their side. But this is good bowling as well, not giving anything away. Sarfaraz just keeping line length so good, right onto the money. But they have to do a lot of shuffling as it is a left hand right hand combination, which will always trouble the bowler as well as the fielders. Every rotation of the strike, they have to bring in the change, the fielding. And that is exactly what we are seeing. Bowled him, early breakthrough here, missed it completely.
And Sarfraz strikes, Shailendra departs on 1. Rasik joins in at number 3, and what a wonderful over that comes to an end. Completion of 1 over, score is 3 for 1. Rohit Mishra from the far end. Good drive from the new batter. Waiting is the call coming from Yogesh Naik, and quickly Rasik is heading back to his crease. That is a good call, absolutely, no doubt. If they had to go for that single, that could have been trouble. One partnership will be very important here for the batters. On the half volley, played beautifully into the gap. But good work. Rasik gets off the mark with a single. So what a wonderful over that was. The very first over just gave 3 runs and picked up a wicket. Sarfraz setting a good example of how to bowl, which areas to maintain. But it is now a testing time for the batters. Absolutely challenging. How to stay, stow and play for a long time. That will showcase their temperament. And of course, a partnership will be very handy here for the Kings. In the covers now, Sarfraz, and slight bit of adjustment in the point region for the left-hander Yogesh Naik. Look at the wall of fielders in the offside. Gully, point, short third man. Covers, mid-off. Way outside the off stump, and good running as well. So 2 runs easy, adding up to the total to take the score to 6 runs on the board. Yogesh is playing the ship anchor's role, which is much needed now for this point of time.
Oh, lovely work today. Once again, should be a single comfortable, if not two. Oh, they're going up for two, pushing hard and will get it easily. This is wonderful running between the wickets. A slight hesitation there, but quickly covering the second run as well. Absolutely a fantastic running between the wickets. These two will take the score up to 8 runs. Now the score is ticking with singles and twos. This is exactly how they need to bat. On the back foot, just wanted to slice it. Good delivery from Rohit Mishra. This is the second over and the score is 8 for the loss of 1 wicket of Shailendra. In the very first over, and now things are looking much better, improvising every ball by ball for the Kings. Nicely done. Oh, quickly, this should be oh, it looked like the ball would race away. Plentiful of bat on that and beautifully timed that was from Risik. But wonderful hands on the ball. Good fielding, saving 2 runs for his team. And picked up to Risik. Quick running between the wicket once again. These two are gelling well on the crease. And a much needed partnership now. Slowly but surely prospering between these two batters. Four overs of the power play, and that will be the advantage for the batters. Anything in the gap, anything the ball beats the short fielder will race away to the fence, except those two positions where the fielder has been deployed deep. For now, there is one fielder in the deep sweeper cover, another one in the deep square leg. Oh, slightly deviation there. The ball drifting down to the leg side. End of 2 overs. It's 10 for 1. So Sarfaraz once again from the far end. On the half volley, beautiful drive, but straight to the fielder. Oh, this is absolutely a bad luck for Yogesh. What a wonderful shot, but straight to the fielder in the mid-on region, and the fielder making no mistake. This will be the second wicket for Sarfaraz. He's picking up wickets every over that he bowls. Such a lucky bowler that he is. Picked up 2 for 10. 10 runs on the board and 2 wickets down. Kings batting first.
Sudeep Narayan joins in after the dismissal of Yogesh Naik. Good looking shot, but straight to the fielder. That was the wrong direction from Yogesh and paid the prize. So 2 wickets down on a total of 10. And now all depends on these two, Rasik Paikot and Sudeep Narayan on strike. The batters will take some time to get set. And once again a wonderful over, turning out to be good in favor of the Hustlers. And what a breakthrough has been provided by Sarfaraz. Early 2 breakthroughs, wonderful to push the batters back on the back foot. Oh, lovely drive to get off the mark with a single. Sudeep Narayan. Once again a quick reminder. Margao Cricket Club organizes later Ferdinand Coelho Memorial Veteran Members League 2023 Season 1. The fielding, the bowling is so far so good of Hustlers, who won the toss and opted to bowl first in this match. And now one deep field has been pushed in the square leg. Oh, once again wonderful running. However, the running between the wicket is so wonderful right from the beginning. Even Rasik and Yogesh were just running like sprinters, singles and twos. It was so good batting then, before once again Sarfaraz could strike. Yes is a call. Once again a wonderful running. Stealing singles under the noses of the fielder. And Rasik Paikot is very smart and intelligent. Another fantastic over comes to an end of 3 overs. 13 runs on the board. Oh, nicely done. We'll have to wait for the umpire signaling. The ball looks like will race away and win the race, and yes it does. The first boundary, wide and boundary. Altogether 5 runs straight away. This is good work. Wonderful extension of hands, and the ball slightly drifting down to the leg side. That was called wide and a boundary. Oh, this time slightly in the offside. Wicket
can see slight struggle there from Rohit Mishra. Maybe trying to just bowl a pace delivery. So far, no luck for him when it comes to the picking of wickets as compared to Sarfaraz. Full around the half wall, he played straight back to the bowler, Sudeep Narayan. And the bowling is so good, not allowing the batters to settle down, get set and play their shots, and still mounting the pressure. Inside edge should be one comfortable, maybe two. Wonderful. This is exactly what has been expected from these batters, trying to convert every single into two and twos into threes. No doubt, such wonderful runners between the wicket. When they can score 10, it could be 20 if they keep pushing in this manner. A slight bit of adjustment once again from Rohit Mishra. Just remove the short gully, and there is now a short mid-wicket fielder. With the first slip has come in the position of the gully. Gully point, deep sweeper cover. And mid-off, the ball straight away once again hits to mid-off fielder, and he doesn't drop many. Oh, this time he does. This time he does. It looked for me like as if he has taken the catch, but on the impact, I think the ball has just popped out. Oh dear, that would have been the third breakthrough, but I think the ball hit right on his nail and he's injured. He needs a first aid box. I think the ball has took off his nail and still trying to dust his hand. That is an indication of excruciating pain. Yes, medical box is coming to him. Oh, he is pushing himself to the medical box. Well, the ball is up and will be safe. The batter has to be good with the timing. The surviving on the edge. So end of 4 overs, 2 opportunities. Going begging, and the score is 23 for the loss of 2 wickets.
Surfraz to begin the fifth over. Score is 23 for the loss of 2 wickets, and these two are once again trying to reconstruct, to rebuild the inning after the fall of 2 quick wickets. Shailendra and Yogesh Naik to depart. Oh, nicely done, straight to the field. A slight fumble has allowed a comfortable single. Rasik Paikut is so quick. He's so quick that he's just disappearing in front of the eyes. Like the rodent in the jungle in front of the wildcat. Just quickly runs and hides. Oh, lovely drive, absolutely. Typical cricketing book style drive from Rasik Paikut. He's showing a lot of sense, a lot of responsibility. Rasik Paikut wants to stay and play the ship anchor's role. One batter need to stay and play. Such a role will be quite handy for the batting team. On the back foot from Sudeep Narayan. Just trying to be slightly cautious and careful for this particular bowler, that is Sarfaraz, who's turning out to be one wicket taking bowler. Picked up one. Shailendra in the very first over, clean bowled, wrapped him up. And in the second over, a fantastic catch was taken by Santi to depart and dismiss and perish Yogesh. And then of course he dropped one. I just wanted to, no footwork can be seen from the batter on this delivery. He was completely taken by surprise with that rising delivery. Oh, he's been fantastic today, Sarfaraz. The line, the length, the pace, absolutely wonderful. Just not giving an inch to the batters to be comfortable for them to drive on the front or on the back foot. Oh, lovely drive, good footwork. Oh, single will be handy here. Oh, nicely done, but straight to the fielder. Look at the wall of fielders there in the cover especially. Altogether 5 fielders as we can see. One in the short. Gully, point, deep sweeper, cover and mid-off. So end of 5 overs, it's 27 runs on the board for the loss of 2. 28 for 2. After 5 overs, it's 28 for 2.
Oh, nicely done, but straight to the fielder. That should be one again. Could be two. Slight fumble there. Advantage here for the batters. And they will not hesitate to convert that single into two. As we know, they are just good runners between the wicket. Any opportunity, any chance, they will just not let it go. That has been the reputation of the batters. They are good when it comes to the running between the wickets. Oh, lovely shot. The ball is up and will go past Sarfaraz and will be definitely a boundary for sure. It looked like a risky but a much needed boundary here for the batter, and Sudeep Narayan executes it with good timing just above the head of the Sarfaraz, who was positioned in the gully region. However, there has been three opportunities. One easy catch went down as the ball hit Santi right on his nail and popped out. Fantastic wicket keeping there, very quick. But Sudeep was well in spite of the flash belts off. Brilliant behind the stumps. Oh, lovely shot picked here up on the half volley, and the ball will once again race over to the fence. Absolutely exquisite timing from Sudeep Narayan. He's just picking up boundaries now this over. He's gaining with confidence, and absolutely that confidence is needed. Whenever the batter hits the boundary, that will boost his morale, and he's looked quite pumped up, Sudeep Narayan. And this was absolutely fantastic drive. Everything was right in this shot selection. Oh, being a little bit cautious and sensible. Oh, single easy. As this is the sixth over which is in progress, and a leg by signaled. Sudeep Narayan running a dry throat. A drive gentle by Rasik Paikot and a single easy. So end of 6 overs, it's 40 for the loss of 2. Way outside the off stump and a wide. The very first delivery is Santosh. He's a change in the bowling after 6 overs of the power play. I beg your pardon, 4 overs of the power play, but after the 6 overs,
It's Santosh on the bowling mark from the far end. So 10 overs from the far end and 10 overs from the Rajesh Godge pavilion end will be the scenario. In the meantime, beautifully cut over but finds the field in the deep point region. As the ball is travelling quite quickly, very quick outfield. And what a beautiful ground this is, MCC. It's been 92 years old ground. Score is 42 with the help of this single. Nicely done, but will be a gentle single. So this is good from the batters. Every delivery they are converting at least for minimum a single run. Going with the flow. And this is what is very important for the batters, spending some time there on the crease. And that is exactly what these batters have done. Oh, slightly in the leg side, and yes, it is a wide. No margin for error in the leg side. And slide the ball drifting down will be quickly called as wide, but not in the offside, because the margin for error is very narrow when it comes to the leg side. Good looking drive on the front. A straight to long off could be a couple of runs here. As we know, these two are good sprinters. Wonderful once again. In spite of the fact the ball was right in the hands of the fielder, they will not hesitate to go for two. This is turning out to be their strength. The good running between the wickets. Apart from the pressure being put by the bowler, especially by surprise picking up too early in the first and the third over. But in spite of that, the Kings are fighting it out, getting back in the game. Good drive again. So the game is singles and twos every delivery. But make no mistake, Sudeep Narayan is unpredictable batter. As what we have seen in the last over, picked up two boundaries quickly with such a great timing. Oh, within the parameter, playable delivery. Sees Prashant Patil, the official umpire, ball sent. And Sandesh Gankur in the square leg, been a fantastic official umpire, has been doing a great job even in the MCC leagues since a couple of years. Oh, nicely cut away, but the ball will not go past the gully fielder. So end of 7 is 48 for the loss of 2. Oh, slight fumble there. Advantage once again for the batters, as they will not hesitate to pick up two once again. It's 50 up for Kings with the help of these two. So reaching on 50 runs. What a wonderful journey from these batters. Singles and twos, and lot of singles and twos. Continues to come from every delivery. Nicely chipped in.
how one recovers in the T20 format of the game, especially when a quick fall of the wickets. And that is exactly what has done by these batters. Recovering slowly and surely with singles and twos. And what is good to see is Rasik by court. He's taken the responsibility and showing a lot of sense, the quality, the temperament. Oh, could be another wicket here, diving effort there from Samir. The ball pops out. That would have been one fantastic catch if he had held. Sudeep Narayan just getting lucky here. As he played straight, angled it to Samir, who was deployed in the short third man. Lovely drive on the front. This is good drive in the deep sweeper cover by Rasik by court. Can Sudeep Narayan make the most out of this opportunity in life that he has got? Well, he has to. And just considered as a playable delivery. Sandesh Gaonkar was a question asked by Sudeep Narayan, wasn't that a wide? However, it's end of 8, 54 for 2. End of 8 overs, it's 54 for the loss of 2 wickets. For 2. Should be wide, and yes it is. Another single as well. So 56 with the help of these two. Sudeep is batting on 25, whereas Rasik on 17. His individual score. However, this is the 9th over which is in progress. Another single additional here from Sudeep Narayan. Though the batters are playing on the double digit, they need to really speed up now. Awful toss opportunity there. Went for the sweep shot. No wide, says the official. The batter always loves to face the deliveries, especially the deliveries when they are coming in the leg side in full toss. Will be a great opportunity. Coming down the track and cuts it beautifully, but straight to the fielder. What a sharp fielding there, not allowing the ball to sneak and go past the fielders. Good commitment there from the fielders. Inside edge, and should be a couple of runs, or maybe the ball might just race away to the fence. It looks like the ball is speeding up. Good footwork. The
ball finds the gap, the inside edge of the bat, and with the velocity and pace, Sudeep is on 28 runs, whereas Rasik Paikot is on 18. Very quick fire from Sudeep Narayan. In spite of the fact that he came late after Rasik. Cuts it once again, but straight to the field. Another single will be additional here. Always it is important for the batters to also play on the front. But maybe that is his favorite shot, to just slice the ball. Maybe just trying to find the gap between gully and deep. Deep third man region, and this is exactly how they need to drive. That was one quality shot from Rasik, but straight to the fielder. End of 9 overs, 62 for 2. The Abdul Qadir of Hustlers, Samir Desai. Tenth over in progress. Oh, full toss ball, nicely backed away. That will race away to the fence. Beautifully timed shot from Sudeep Narayan. He moves to 33, his individual score. 33 is the runs of Sudeep Narayan, whereas Rasik Paikot is on 20. Oh, full toss ball again, straight down the ground, in between long off and long on. And that's a curtain down for Sudeep Narayan for his outstanding batting contribution of 35 runs, as is the rules of Members League. The batsman has to retire on 35, or he can take a big shot on 34, which is allowed. But he has played his part so well. 69 for 3 down now. Kings. It's a drinks break.
in the strategic timeout. So welcome back. This is the 10th over which is in progress, and Samir Desai on the bowling mark. Vinay Sambhari on the striking position, and Rasik Paikot is on the non-strikers end. Should be 2 here to take the score to 71 runs, and yes, it will be. Look at the resilience and scoring at the rate of 7 runs every over now, the batters. Especially a fantastic batting from Sudeep Narayan, who contributed 35 runs, and once again look at Rasik Paikot, speed like a cheetah, who runs at a speed of 160 kilometers an hour. He's so quick between the wickets. He's pushing batters, his partners for 2. Always believe. Oh, another wicket here. Vinay Sambhari wanted to slice it, but fine edge, and wicketkeeper makes no mistake in grabbing that opportunity. What a disappointment for him as the 4th wicket goes down of the Kings on a total of 71 runs after 10 overs. 73 after 10 overs for the loss of 4 wickets.
So Ashish Tukle joins in at number 6 after dismissal of Vinay Sambari. Wanted to slice it but fine edge, and the wicketkeeper grabs the opportunity. So once again trying to take the wicket, and once again trying to push the batters on the back foot. And once again the role will be the same for the batters. They have to reconstruct, regain and rebuild the inning, as exactly what they did after the fall of 2 wickets after Shailendra and Yogesh. It was Sudip Narayan and Rasik Paikot who formed the partnership and took the team to the good position. तो 10 ओवरों की समाप्ति के बाद 73 रन 4 विकेट के नुकसान पर। हालांकि नए बल्लेबाज आशीष तुकले जो कि 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे हैं, उनका साथ निभाने के लिए फिर से एक बार तैयार है रसिक पैकोट, जो काफी लंबी पारी खेल रहे हैं और निश्चित तौर पर इसमें कोई दुराई नहीं कि शिप एंकर का रोल निभाते हुए क्रीज पर। क्या शानदार बल्लेबाजी, काफी देर से रुके हैं, अपनी टीम की डोज संभाले रसिक पैकोट। जिस प्रकार से परंपरा है और ट्रेडिशन है कि 10 ओवर के बाद अब राजेश गोड के पवेलियन की ओर से गेंदबाजी का क्रम जारी रहेगा। स्ट्राइक पर रसिक पैकोट। 11वीं ओवर की शुरुआत होने जा रही है और हल्की सी फील्डिंग में बदलाव हुआ। सभी दर्शकों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत, योकार, वार्म वेलकम और इस्तकबाल मैं कहना चाहूंगा। बालकृष्ण हुडालकर की गेंदबाजी पर फिर से एक बार ड्राइव, वहां पर बल्ले का बाहरी किनारा, कम से कम 2 रन या फिर शायद गेंद निकल जाएगी 4 रनों के लिए। देखिए क्या कमाल की टाइमिंग दी है रसिक ने, और गेंद बिल्कुल काफी तेजी से सीमा रेखा पार जाती हुई। पटकी हुई गेंद इस बार पुल करने की कोशिश, हल्की सी टाइमिंग पर संघर्ष करते नजर आए, मगर 1 रन अवश्य मिलेगा। हमने कई जोड़ी देखी है, भाइयों की जोड़ी, खास तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट में। अमरनाथ बंधु, पठान बंधु इंडिया के लिए, अब पांड्या बंधु जो कि इंडिया के लिए शानदार प्रदर्शन उनका। अकमल बंधु पाकिस्तान के लिए, हसी वॉली ऑस्ट्रेलिया के लिए, मैकुलम और मार्शल ब्रदर्स न्यूजीलैंड के लिए खेला करते हैं थे। मगर देखिए यहां पर स्कोरिंग में भाई और बहन की जोड़ी यानी कि भरद्वाज पहली दफा और काफी रईस भी होते हुए दिन ब दिन। सूरज और सीता लोअर फील्डर्स में कराना शॉट, मगर सीधे फील्डर को पाया, कोई रन का मौका नहीं। सुंदर फील्डिंग का मुजाहरा बालकृष्ण हुडालकर की गेंदबाजी, जो कि 11वीं ओवर से सुंदर गेंदबाजी। हाफ वाले पर एक लॉफ्टेड शॉट, वहां पर खिलाड़ी तैनात, रुकने में कामयाब। केवल 1 रन पर संतुष्टि प्राप्त करनी होगी बल्लेबाजों को। स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 79 रनों पर। 25 पर रसिक। ड्राइव बिल्कुल संभल कर, नपी तुली बल्लेबाजी बिल्कुल की है। और शेरों के दरमियान चालाक लोमड़ी की तरह उनकी बल्लेबाजी रसिक पैकोट।
हालांकि धीरे धीरे अब 26 पर पहुंच चुके हैं रसिक पैखोट, अभी भी 9 रन बना सकते हैं, मगर जिस प्रकार से उन्होंने एक छोर संभाला है कमाल का। कई सारे विकेट गिरते उन्होंने देखे हैं, लगभग 4 से 5। चार विकेट है, बैकफुट पर कट कर दिया है। फिर से एक बार 2 रन की यहां पर रहेगी कोशिश, मगर धीरे से दौड़े हैं, यानी कि केवल 1 रन ही लेना चाह रहे हैं। इरादे बिल्कुल साफ बल्लेबाजों के। 11 ओवर की समाप्ति, 81 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 11 81 for 4। वो इस बार एक आसान सा कैच खेल दिया था, बिल्कुल फील्डर के पास, और रोहित मिश्रा ने कोई गलती नहीं की। सुंदर कैच के साथ 5वां विकेट गिरता हुआ टीम किंग्स का, मगर सबसे धुरंधर बल्लेबाज अपूर्व भेमरे मैदान पर उतरते हुए, जबकि काफी नाराज अपने आप से शैलेश टुकले आउट होकर वापस पवेलियन लौटते हुए। फिर से एक बार सभी दर्शकों को बताता चलूं कि मार्गों क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित लेट फर्डिनेंड कोएल्हो मेमोरियल वेटरन मेंबर्स लीग का यह शानदार मुकाबला थर्ड प्लेस के लिए यह मुकाबला होता हुआ, जो तीसरी और चौथी नंबर की टीमों में दोपहर में रहेगा फाइनल का मुकाबला। तो सभी टीमों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा बिल्कुल बढ़िया मैचेस इस मैदान पर खिलाए जाते हैं। अपूर्व भेमरे नए बल्लेबाज, जो कि 7वें नंबर पर। और फ्लैटर गेंद पर ड्राइव, देखना होगा इशारा, शायद बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा है, और 1 रन के साथ अपना खाता खोलते हुए, बाय का इशारा, माफी चाहूंगा, अभी भी खाता खोलने से दूर अपूर्व। वो कदमों का इस्तेमाल किया, इस बार फुल टॉस पर कड़ा प्रहार करने की कोशिश रसिक पैखोट के द्वारा, मगर आखिरी लम्हे पर संभल कर खेला, इस बार कट कर दिया है, 1 ही रन मिलेगा। अब रसिक भाई भी थोड़े से थके नजर आ रहे हैं, कितना दौड़ेंगे, जब से गए हैं बिल्कुल दौड़ने का कार्य शुरू रहा है उनका। और इस बार 1 रन मिल सकता है और अपना खाता खोलेंगे अपूर्व भेमरे, एक शानदार बल्लेबाज जो सही टाइम पर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे हैं। इस ओवर के बाद अभी भी 8 ओवरों का आना बाकी है, यानी कि 12वीं ओवर प्रगति पर। कलाने के साथ इस बार दिशा दी है डीप स्क्वायर लेग की ओर 1 रन के लिए, और इस 1 रन के साथ 12 ओवरों की समाप्ति होती हुई
सूरज वन बॉल सीधा वन बॉल टू गो सीधा वन बॉल टू गो 85 रन 12 ओवरों की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर। तो गेंदबाजी में फिर से एक बार बालकृष्ण हुडारकर जो कि राजेश गुडगे पवेलियन एंड की ओर से गेंदबाजी का क्रम रहेगा जारी। स्ट्राइक पर रसिक, फिर से एक बार बैकफुट पर कट कर दिया है। 2 रन की रहेगी कोशिश और दौड़ पड़े हैं, अपूर्व को भी दौड़ने पर मजबूर किया है रसिक पैखोट ने। 31 रन पर पहुंच चुके हैं रसिक, 31 रन, 30 रन पर, माफी चाहूंगा, 30 रनों पर पहुंच चुके हैं, 30 रन। फुल टॉस पे कड़ा प्रहार, इस बार इनसाइड आउट का प्रयोग और गैप दूर निकाला है। 34 पर अपने निजी स्कोर पर एक बड़ा शॉट लगा सकते हैं रसिक पैखोट। सुंदर टाइमिंग से भरपूर शॉट और गैप बिल्कुल दूर निकाला है। क्या एडजस्टमेंट, बिल्कुल बल्ले का कमाल, और क्या ही पारी खेली अब तक, शानदार। 2 बल्लेबाज सुदीप नारायण और अब रसिक पैखोट 35 रन बनाते हुए। फिर से एक बार इनसाइड आउट का प्रयोग, मगर फुटवर्क के साथ वहां पर सुंदर फील्डिंग। 2 रन लेना चाह रहे हैं मगर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हुए, यानी कि अपने 35 रन पर शानदार पारी खेल, रिटायर आउट होते हुए रसिक पैखोट एक बिल्कुल चैंपियन पारी खेली है उन्होंने। जिस प्रकार से अपना टेम्परामेंट दिखाया है, अपनी कला दिखाई है, अपनी साझेदारी दिखाई है, बिल्कुल कमाल की बल्लेबाजी। शानदार बल्लेबाजी, बिल्कुल अपने आप से संतुष्ट और एक मुस्कुराहट, ये देखिए चैंपियन की मुस्कुराहट उनके चेहरे पर। रसिक पैखोट 35 रन बनाकर बिल्कुल एक शानदार पारी खेली है, बढ़त दी है अपनी टीम को। वेल प्लेड रसिक, वेल डन। अगले बल्लेबाज मैदान पर उतरते हुए संजय नेत्रावलकर। वो बैकफील्ड पर संभल का ड्राइव, इस बार सीधे समीर की ओर गेंद, कोई रन का मौका नहीं। तो दोनों ही बल्लेबाज नए हैं, दोनों को ही टिकना होगा, जमना होगा, लंबी पारी खेलनी होगी। बढ़िया ड्राइव, सुंदर कलाई का उपयोग हमेशा अक्सर करते नजर आते हैं अपूर्व। इक्का दुक्का रन के साथ फिर से एक बार यहां पर पारी बनाने की शुरुआत, साझेदारी बनाने की कोशिश। किंग्स की पहले बल्लेबाजी, जबकि हसलर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया था। काफी सारे दर्शकों का यहां पर जमा उड़ा इस मैच को देखने के लिए, जबकि अगला मैच जो होगा फाइनल्स मुकाबला। और संभल कर इस पार संजय द्वारा ड्राइव, समझबूझ की बल्लेबाजी, धीरे धीरे से हर एक गेंद के साथ अब एक एक रन बनाते हुए बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति होती हुई 13, 94 पर 6 विकेट।
वो इस बार वाइड का इशारा, उसके साथ एक रन भी जो कि मिलता हुआ बल्लेबाजों को। 2 रन के साथ 96 पर स्कोर पहुंचता हुआ, जबकि केवल अब 4 रन दूर हैं 100 रन से। हाफ वाइड पर सुंदर टाइमिंग से भरपूर शॉट अपूर्व के बल्ले से निकलता हुआ 4 रनों के लिए। हालांकि कोशिश की वहां पर रोहित मिश्रा ने, मगर गेंद को नहीं रोक पाए, काफी तेजी थी गेंद में। और 100 रन पूरे होते हुए 100 अप फॉर टीम किंग्स। तो 100 के आंकड़े पर पहुंचते हुए टीम इस सुंदर टाइमिंग से भरपूर शॉट के साथ, जो कि निकला अपूर्व के बल्ले से, दंदना था चौका। इस बार पॉइंट की ओर दिशा दी, 1 रन। और इसी प्रकार की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं अपूर्व भेम्रे, एक शानदार बल्लेबाज, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर जिसे कहते हैं। अक्सर जब कभी जाते हैं बड़ा स्कोर बनाते हैं, ये उनकी खासियत है। उनके साथ संजय अब स्ट्राइक पर। वो काफी बाहर गेंद, कितनी बाहर, अंपायर ने कहा इतनी बाहर। दोनों हाथें फैला दिए। वो तेज गति से इस बार अपील और आउट। ये 7वां झटका लगता हुआ, रफ्तार पर पूरी तरह से चकमा दिया बल्लेबाज को और समझ नहीं पाए संजय ने तरावलकर। ये 7वां झटका लगता हुआ, जबकि स्कोर अभी भी रुका हुआ 102 रनों पर। बिल्कुल कमाल की गेंदबाजी, एक स्मार्ट डिलीवरी यहां पर डाली गई थी गेंदबाज द्वारा। काफी निराशाजनक संजय के लिए, तेज गति की गेंद नहीं समझ पाए और ये एलबीडब्ल्यू का इशारा आता हुआ। तो मेरे मित्र ख्वाबों की दुनिया में बिल्कुल चले गए हैं और नए बल्लेबाज मैदान पर उतरते हुए गुरुदत्त आंगले, जो कि 9वें नंबर पर अब तक कुल मिलाकर 7 विकेटें गिरी हैं टीम किंग्स की पहले बल्लेबाजी करते हुए, जो कि आज के दिन का पहला मैच 3rd पोजीशन के लिए ये भिड़ंत होती हुई हसलर्स बनाम किंग्स के बीच ये मुकाबला। अपना गार्ड लेते हुए, अपनी मार्किंग करते हुए गुरुदत्त। देखना होगा कि किस प्रकार से अपने साथी अपूर्व के साथ साझेदारी बनाएंगे, उनका साथ निभाएंगे। जबकि फिर से एक बार गेंदबाजों ने कमाल कर दिखाया है, लगातार विकेटें प्राप्त की हैं। और सबसे खतरनाक गेंदबाज हैं आपके स्क्रीन के बिल्कुल सामने, रेड कैप पहने सैयद सरफराज। बदलाव हल्की सी फील्डिंग में थोड़ा सा होता हुआ, और पहली गेंद पर बिल्कुल अपना खाता खोला है गुरुदत्त ने। और जिस प्रकार से बल्ले से आवाज निकली है, यही दर्शाता है कि कितने बेहतरीन टाइमिंग कर सकते हैं गुरुदत्त। जाने दिया गेंद को और वाइड का इशारा। अपूर्व छेड़छाड़ नहीं करते जब देखते हैं कि गेंद बाहर जा रही है। वाइड का इशारा, इसी बीच कड़ा प्रहार, 2 रन की कोशिश, यहां पर पहुंच जाएंगे गुरुदत्त। संभवतः रहेगी आखिरी गेंद ड्राई इस बार 1 रन के लिए, अच्छा शायद 2 रन की कोशिश रहेगी, मगर स्कोर के साथ पहुंचता हुआ 107 रनों पर, जबकि 14 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। 7 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए किंग्स की टीम।
6 ओवर अभी भी हैं बाकी, यानी कि 36 गेंदें। अगर 36 गेंदों में 40 रन भी बनाते हैं तो 150 के आसपास रहेगा आंकड़ा। बैकफुट पर अच्छा पंच, मगर एक्स्ट्रा कवर की दिशा की और सुंदर फील्डिंग। धीरे धीरे से फिर से एक बार मौके की तलाश में बल्लेबाज जमने का प्रयास दिखाई देता हुआ क्रीज पर। ओ, यहां पर मौका था बालकृष्ण उडारकर को, बिल्कुल काफी आगे पहुंच चुके थे अपूर्व, मगर किस्मत ने साथ दिया। जीवनदान मिलता हुआ यहां पर अपूर्व भेमरे को। इस बार बैकफुट पर खेलने की कोशिश, उसी के साथ एक और विकेट का पतन होता हुआ, यानी कि 8वां झटका लगता हुआ गुरुदत्त आंगले के रूप में, जबकि स्कोर रुका हुआ 108 पर। राजेश मैदान पर उतरते हुए 10वें नंबर पर। राजेश अगले बल्लेबाज जो कि 10वें नंबर पर, साथ निभाना होगा अपूर्व भेमरे का। फिर से एक बार जोरदार अपील होती हुई, जिस तरह से हर दिन इतवार नहीं होता, जरूर नहीं कि हर अपील आउट हो। लेग बाय का इशारा, लेग बाय सिंगल के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 109 रनों पर, जबकि 8 विकेटों का पतन हो चुका है किंग्स की टीम का, जो कि पहले बल्लेबाजी करते हुए आज के दिन का पहला मैच थर्ड पोजीशन के लिए भिड़ंत। पहले आगे फिर बैकफुट पर खेल दिया, इस बार डीप मिड विकेट की ओर 2 खिलाड़ी वहां पर तैनात। सिंगल हैंडेड पिकअप एंड थ्रो के साथ केवल 1 रन पर सीमित किया, स्कोर 110 रनों पर पहुंचता हुआ। और जब कभी विकेट गिरती है तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा दबाव बल्लेबाजों पर बना रहता है, मगर हालांकि पहले ये देखिए बिल्कुल सोने पे सुहागा होता हुआ, जहां पर कोई रन की संभावना नहीं थी वहां पर 2 रन मिलते हुए बल्लेबाजों को। 2 रन के साथ स्कोर 112 पर पहुंचता हुआ 15 ओवरों की समाप्ति के बाद 112 फॉर 8। अब देख सकते हैं क्रिकेट फीवर इतना बड़ा हुआ है कि रिद्धीश भी वहां पर प्रैक्टिस करते हुए अपने आप को विराट कोहली बनाने की कोशिश करते हुए रिद्धीश। तो रिद्धीश ने जैसे ही अपना नाम सुना है थोड़े से अचंभे में आ चुके हैं कि कहां से आ रही आवाज और कौन ले रहा है मेरा नाम।
महेंद्र भाई कुशल गढ़ से बीच बल्ले का आंदोलन हिस्सा लगा और 2 रन की कोशिश यहां पर निश्चित तौर पर रहेगी, मगर जैसे देखा कि फील्डर पहुंच चुके हैं गेंद पर, ये देखिए 1 फॉर द थ्रो, 2 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 114 रनों पर। तो अब हर एक ड्राइव के साथ 2-2 रन प्राप्त करते हुए बल्लेबाज, तो क्या कमाल का मैच होता हुआ। उल्टा गेंद, वो बिल्कुल उनकी ग्रोइंग पोजीशन पर लगी है गेंद, और शायद अगर थोड़ी सी ऊपर होती तो निश्चित तौर पर ये नो का इशारा था अंपायर की ओर से, मगर शायद गेंद नीचे को जा रही थी। ओ सुंदर कैच, चिपक गया हाथ में, चिपकाई लो फेविकॉल से वाली कैच है। केवल 5 रुपए का फेविक्विक खरीदा था आज इस फील्डर ने, और उसका फायदा होता हुआ, यानी कि सबसे बेहतरीन बल्लेबाज अपूर्व भेम्रे आउट होकर वापस पवेलियन लौटते हुए केवल 5 रुपए में बल्लेबाज को किया चलता। क्योंकि 5 रुपए के फेविक्विक का जोड़ जब जुड़ता है तो छूटेगा नहीं। वेंकट, टीम की भारी जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर। इस पारी में 2 मजबूत खिलाड़ी आज गलत दिशा की ओर खेलकर अपना विकेट खोए, एक योगेश नाइक और दूसरे अपूर्व भेम्रे, जो बिल्कुल ड्राइव तो सुंदर टाइमिंग के साथ कर रहे थे, मगर दिशा उनकी गलत थी और उस गलत दिशा का खामियाजा भुगता दोनों ही बल्लेबाजों ने। हालांकि अगर ये दो बल्लेबाज जम जाते तो अब स्कोर का आंकड़ा कुछ और होता। जो आपको दिखाई दे रहा है 114, शायद 140 के पार होता स्कोर। मगर फिर से एक बार श्रेय जाता है गेंदबाजों को, जिस प्रकार से लगातार विकेटें लेकर साझेदारियों को तोड़ रहे हैं। बिल्कुल कमाल की गेंदबाजी। वेंकट नए बल्लेबाज। वाइड का इशारा। इस अतिरिक्त के साथ स्कोर 115 पर पहुंचता हुआ 115। वो दिशा दी है इस बार वेंकट ने। 1 रन के साथ अपना खाता खोलेंगे ये बल्लेबाज। 116 रन। धीरे धीरे स्कोर में इजाफा होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ धीमी गति से, यानी कि कछुए की रफ्तार से, क्योंकि अब केवल आखिरी विकेट है। हाना होता है वैसे बीच लौटता होगा तुरंत वेंकट को, मगर आसानी के साथ लौटेंगे क्योंकि हल्की सी फंबल भी वहां पर हुई है फील्डर द्वारा। स्कोर अभी भी रुका हुआ 116, जबकि ये आखिरी गेंद रहेगी 16वीं ओवर की। गेंद हवा में इस बार, सुंदर टाइमिंग, जबरदस्त पकड़ बनाई है गेंद पर बल्लेबाज ने, और 4 रन। 120 पर स्कोर तेजी से पहुंचता हुआ, जबकि 16 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। 9 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए किंग्स की टीम। कहीं जाइए अगर है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि यही खासियत है किंग्स टीम की कि उनके टेल एंडर्स भी बड़े शॉट लगा सकते हैं।
एक बेहतरीन मिसाल आपने अभी देखी वेंकट के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार टाइमिंग से भरपूर शॉट। माफी चाहूंगा, राजेश के बल्ले से निकलता हुआ। तो फिर से एक बार लगभग 130 140 तक पहुंचने की कोशिश यहां पर बल्लेबाजों द्वारा दिखाई देते हुए, जबकि गेंदबाजी में फिर से एक बार रोहित मिश्रा गेंदबाजी के लिए आए हैं 17वीं ओवर में। ऑन द राइज बढ़िया ड्राइव लॉन्ग ऑफ की ओर, बैटिंग का अच्छा था वेंकट द्वारा। दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल अपनी नेचुरल बल्लेबाजी करते हुए, राजेश और उनके साथ वेंकट। कोई दबाव जो कि दिखाई नहीं देता वो बल्लेबाजों पर। किसी प्रकार से होनी चाहिए बल्लेबाजी। लगता है कि पूरे के पूरे ओवर खेलेंगे बल्लेबाज। उस सबल कर कलाई के साथ मोड़ दिया है गेंद को ऑन साइड की ओर एक रन के लिए। हालांकि देखिए गेंदबाज रोहित मिश्रा द्वारा कोई रूम बल्लेबाजों को जो कि उपलब्ध नहीं है, उसके बावजूद हर एक गेंद पर एक एक रन बटोरते हुए बल्लेबाज। वो बड़ा शॉट खेलने की फिराक में बिल्कुल अचानक लाठी चार्ज करने की कोशिश बल्लेबाज वेंकट द्वारा। खतरा जब होता है तब होता है जब बल्लेबाज अचानक बड़ा शॉट खेलने की फिराक में रहता है, जबकि हर एक गेंद पर इक्का दुक्का रन के साथ काफी सुंदर बल्लेबाजी तो निश्चित तौर पर हो रही है। संभल कर बिल्कुल सूझबूझ के साथ अपने ग्लव्स का मुंह खोले हुए इंतजार में एम्बिश हंटर। जिस तरह से रिवर नाइल के मगरमच्छ काफी खतरनाक, उसी तरह से विकेट कीपर भी काफी खतरनाक। ओवर की समाप्ति इसी के साथ 17 123 for 9। बिल्कुल मैदान के बाहर ये देखिए रिद्धेश अपने आप को बिल्कुल विराट कोहली एक दिन बनाएंगे। जैसे मैंने उनका नाम लिया, जैसे उन्होंने नाम सुना अचंभे में आ गए। मैं तो प्लेइंग 11 में भी नहीं हूं, बेंच प्लेयर भी नहीं हूं, फिर भी मेरा नाम लिया जा रहा है कमेंटेटर द्वारा। तो 3 ओवर अभी भी बाकी, यानी कि 18 गेंदें आनी शेष। तो 18 गेंदों में 20 रन भी बनाते हैं तो स्कोर हो जाएगा 143। तो लगभग 140 के पार, मगर एक एक रन बनाने के या फिर गेंदबाज द्वारा कुछ और कर गुजरने का यहां पर इरादा बिल्कुल दिखाई देता हुआ, तभी तो फील्डिंग में तब्दीली होती हुई, क्योंकि इस जोड़ी को तोड़ने की कोशिश होती हुई। 18वीं ओवर की शुरुआत में गेंदबाजी में स्मित देसाई, महेश आए हैं।
फ्लैटर गेंद कदमों का इस्तेमाल इस बार लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर गेंद को भेजा है जहां पर रोहित मिश्रा है तैनात, एक रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 124। मुझे लगता है कि बल्लेबाज इसी प्रकार से बल्लेबाजी का क्रम जारी रखेंगे। राजेश द्वारा इस बार एक रन। एक 125 रन स्कोरबोर्ड पर 125। बढ़िया शॉट इस बार, वहां पर थोड़ी सी मुशक्कत करनी होगी फील्डर को। फंबल वहां पर मगर नियंत्रण में है गेंद। ऐसे लगा कि गेंद चली जाएगी सीमा रेखा पार, मगर काफी अच्छी कोशिश वहां पर। हालांकि दिल बिल्कुल मुंह में आ चुका था गेंदबाज के। ओ इस बार ये पारी का अंत होता हुआ 128 रहेगा लक्ष्य जीतने के लिए 120 गेंदों में, यानी कि हसलत के लिए लगभग रन बॉल की स्थिति इस मैच को जीतने के लिए। तो आगे की इनिंग में क्या होगा ये देखने वाली बात रहेगी, मगर उनके लिए भी आसानी बिल्कुल नहीं रहेगी। तो फिर से एक बार मैं दोनों ही टीमों को कहना चाहूंगा ऑल द बेस्ट और ढेर सारी शुभकामनाएं। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और जल्द आप सभी दर्शकों के साथ फिर से एक बार जुड़ेंगे अगली इनिंग में। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।
Yo, you sweet life, Fanta.
Welcome back to the second inning. Amit Mishra on strike and Balkrishna Hodarkar. Oh, lovely shot. The ball is up and there's a fielder getting underneath. It could be the first breakthrough here. Oh, slight a bit of a juggling out there, and what a life here for Rohit Mishra. And the ball has rolled towards a boundary. Blessings in disguise. The ball was up and catchable in spite of the good effort there from the fielder. He dropped the catch the very first ball, and just the ball rolled over the rope for a boundary. I would say this will be a lucky boundary for the batter, as his Haas was right in the mouth. It was a good judgment there from the fielder, just underneath the ball, but unable to grab the opportunity. We outside the off stump, but that is a good delivery considered by the official umpires, Prashant Patil, baller's end, and Sandesh Gaonkar, the square leg. These two officials have been a hot favorite for this ground. They have always been trusted by the committee of MCC. Oh, lower full toss drive, but didn't quite time the ball. It'll be no run after that boundary, after that risky boundary. Oh, shot of length and a little bit of a bat on that. A single sensible after that boundary. A shot of length, slice it but straight to Apurva. No problem in stopping that ball, that speeding delivery. He's one fantastic athlete on the field. A good drive this time from Balkrishna. He gets off the mark with a single, and the team's total is 6 runs on the board. After the completion of 1 over, score is 6 without a loss. Rasik Pekota to begin the second over. Score is 6 on the board, and a warm welcome to Murali Talekar, my great friend and extremely good cricketing coach. Lovely shot on the half volley, beautiful fielding. Absolutely wonderful fielding there, diving and stopping what could have been a boundary if the ball had to go past the fielder. It was absolutely a crack from Rohit Mishra, but unable to pierce the wall of the fielders, especially the mid-off fielder. Just a nudge here for another single. Rohit Mishra is just trying to utilize
that life, that opportunity to the best what he can. But he's a natural striker of the ball. He loves to play. He's natural. On the front, nicely done. Just a nudge from Balkrishna. A single again. So that is the idea. Maybe just trying to spend some time out there on the crease. And just trying to know how the ball is coming up to the bat. The judgment is very important for the batters. For that, they need to spend some time, and that is exactly what these two are doing there on the crease. Oh, once again a lofted shot, but this time grounded in the deep square leg region. A fumble again, but this time no luck for the fielder. The ball has rolled over. This has happened twice. One after the catch, but this time the ball was racing towards the deep square leg. So 2 boundaries could have been saved, and 8 runs could have been stopped. Straight away to the mid-on region from Rohit Mishra. He just likes to contribute the way he wants to, in such a good starter of the inning. Rohit Mishra is. Cuts it this time, but straight to the field. A wonderful hands to the ball. But the fielding is just getting better in the offside as compared to the leg side. However, end of 2 overs, 14 runs on the board. Great effort there by the fielders. Look at the wall, unbreachable wall here in the offside. Shot third man, gully, point, deep sweeper, cover and mid-off all together. 6 fielders on the offside. And on the onside, shot mid-wicket. Deep square leg, forward short leg, and now slide a bit of a change in the fielding. The sweeper cover has been pulled back in the 30-yard circle. Way outside the leg stump and a wide. When the ball is new, it tends to get the swing. Maybe the ball got that swing in the wrong direction for an extra to the batters. Oh, going after the ball. Outside edge, and it will be a 4. It will be a 4.
Lovely shot, and that will be a boundary, a cracking boundary. White signal. Some extras are also helping the batters here in the run chase of 128 win in 120 deliveries for Hustlers. And this is the match for the third place. However, there is a final in the afternoon session of this beautiful Margaon Cricket Club. Once again have come up with a wonderful tournament in the memory of late Ferdinand Coelho Memorial Veteran Members League. On the half volley, the ball is up and will go past the short fielders. But there is a backup fielder, but he will get to the ball and throw by the time the batters can run for 3. But they have settled down for just 2. Hustlers are moving on to 29 runs with the help of these 2. Whereas Rohit Mishra is batting on 12 and Balkrishna Hudarkar is on 13 runs. A good drive straight to the fielder. .28 on the board, and this could be the last delivery of the third over, and score is 28, and so far so good for the batters as Rohit and Balkrishna are contributing singles and twos, giving a slow start for the team. Trying to pull for a single straight to the fielder, and yes, they will get it a single. End of 3 overs, 29 runs without a loss. Chasing 128 win, MCC Hustlers. Oh, lovely shot on straight, and that will be the first breakthrough.
Oh, the ball kept low. This is a good spell from Rasik Paikot. The beginning of the fourth over. 29 for 1. Beautifully done. Good wristy work from Rohit Mishra, but only for a single, as the ball has been stopped in the fine leg region. This is the best what I can see from Rohit Mishra. He tries to just play all across, but Rohit Mishra is out. Yes, the new batter Sagar joins in at number 3. On the half volley, once again wristy work from Balkrishna Hudarkar. But once again the ball has been fielded in the fine leg region. Whenever there is a fall of the wicket, once again it's the opportunity for the batters to once again reform the partnership. Ball capped low. The uneven. Oh, that could have been a close call. Just in time, Sagar. After the wicket of Rohit Mishra. Rebuilding the partnership, which is important in the run chase. Just wanted to slice it slightly away from the bat. End of 3 overs, end of 4, beg your pardon, is 32 runs on the board for the loss of 1 wicket. This could be extra runs here, wide in boundary. And the 5 runs straight away adding up to the total to take the score to 37 runs. Thank you, says Sagar. Venkat on the bowling mark, and that was absolutely a loose delivery. No need to whack it as the ball has gone wide end for 4. The bowlers need to avoid these kind of runs, which will make target easy for the batters. Just chipped in for a single, and yes, wonderful work from Sagar. As the requirement is just 6.3. Oh, beautifully cut away. The ball will go past the short fielder, but there is a backup fielder to stop that. Trying to now speed up Balkrishna, as he's seeing the ball like a football. And that is the reason why I say the batter needs to spend some time there on the crease, and that is exactly what Balkrishna has done. Oh, wristy work from Sagar. This is absolutely wonderful batting. Every ball, they are going with the momentum of single. Keeping the flow of the runs going, ticking. And Balkrishna at the same time looking for some opportunity. That was pitch delivery. If it had to be a half volley, the ball would have gone straight down the ground. Oh, once again in the leg side, wide signaled. That was a quick delivery from Venkat. He's just trying to bring that variation, and maybe that's the reason why he's just slightly missing it out on the lining. Been second extra in this over.
and bowled him. He was surviving dangerously and looking for the big shot, but missed it completely. And the bowler says, "You miss and I hit." The second wicket goes down of Hustlers. The things will not be easy for them to get to the target of 128. But someone is required to stay and store and play long and sensible inning. Who will that batter be? We'll have to wait and see. Mohin Kuchelkar is a new batter, walks in at number 4 after the dismissal of Balkrishna Hudarkar. Clean bowled right in the block hole. That was one lethal weapon that has been used by the bowlers time and again. And that was used by Venkat for Balkrishna Hudarkar. And a successful delivery. Pacing through the defensive technique of Balkrishna and right onto the middle stump. Will be the last delivery of this fifth over, and the score is 41 for 2. A lot of adjustment from Venkat. Just the last delivery. Well bowled, diving effort on the follow through, but the ball has gone past him for 2 runs. That will be easy picking for the batters. It's 43 after the completion of 5 overs for the loss of 2 wickets. Hustlers chasing 128 to win. Nicely done by Sagar, and Sagar is there to just play singles and taking care of one side as exactly the inning which was being played by Rasik Paikota had taken care of one side and had witnessed a lot of fall of the wickets, almost 4 to 5, but he played sensible, and the same batter is now on the bowling mark from the far end, bringing some adjustment in the field and ready to bowl. This is the 6th over which is in progress. Bowled him, another wicket bites the dust. Rasik strikes. 44 for 3 now, Hustlers.
To say Sarfraz walks in at number 5. Things are looking dangerous here for the moment for Hustlers. But the batters need to really bail the team out of the crisis. This is the game of cricket, full of ups and downs. An unpredictable game. You never know what will happen. As it looked very easy target to chase 128, but things are looking much difficult here for the Hustlers. One good partnership will be handy. Sarfraz takes his guard, marks his line, and ready to face the first delivery from Rasik Paikota. As the score is 44 for 3. Definitely there is a pressure on the batters. And how they deal it. Nicely done by Sarfraz. Risky work to get off the mark with this single. It is absolutely a pressure on the batters, and how they deal with it. It all depends on the batter's temperament. Taking his time, Rasik. He wants the adjustment up to the mark. Oh, nicely done. Once again, straighter delivery. And Sagar is doing the right job. He knows exactly he has to wait there. Oh, nice little ball straight to the fielder. Oh, that was a delivery, just wag it, but he's so cautious and careful. 4 of the wickets. Oh, good punch for a single. Wonderful fielding from Yogesh. And that will mark the end of 6 overs. It's 46 for the loss of 3 wickets. Oh, going full throttle, full-fledged this time. If there had to be a connection, the ball would have definitely gone for the big one, or maybe a boundary for sure. That was a strength unleashed by Sagar. Oh, careful. Very watchful whenever the deliveries are right up onto the stumps. That is smart batting from Sagar. Oh, nicely, that should be a one comfortable here. Let's check to the point fielder. And once again, look at the fielding position. There is one shot third main, gully, deep, super cover. Cover is Yogesh, and a deep long off. On the onside, and now I think Apurva is just coming back in the circle. Mid off, mid on. Short square leg and deep square leg. Oh, should be wide again. Coming down the track and missing the line completely. The ball was slightly deviated towards the leg side.
Sarfaraz is a complete package, good all-rounder. Bowled well and now he has to bat well. On the half volley, didn't quite time the ball, but will just get a single maybe. Yes, it wasn't deliberate though. But as you can see, the pressure is still mounting on the bat. They have not taken the pressure off. A lot of extras though from Venkat, and yes and no, slight hesitation. That would have been risky as the ball was straight in the hands of Yogesh. And a call from Sarfaraz for a single. Oh, lovely drive in the half volley, but straight to the deep sweeper cover. Now this time Sagar wanted to, but waiting was the call coming from Sarfaraz. He's not taking any chances, and rightfully so. A partnership is very important at this point of time for the Hustlers. As they cannot afford to lose any more wickets from here onwards. Nicely done once again by Sarfaraz. And probably will be the last delivery of this 7th over, and score remains on 53. Just waiting is a call, very quick. Can he get back to the crease? And yes, he will. End of 7 overs. 53 for 3. Yogesh was called for the bowling and was being sent back again. The plans best known to the captain. Vinay Sambari has been brought into the bowling proceedings from the 8th over as the score is 53 for 3. This match is definitely getting interesting, ball by ball. And the match is in such a situation that any team can take a lead. If the batters stay, a good partnership, Hustlers can be in the game. He's just chipping in time and again. He's doing a wonderful job, Sarfaraz. And that is exactly the requirement as well. Every ball a single, 6 runs an over. If they keep on getting it, the target will not be a tough task to achieve. Provided they don't lose any more wickets from here onwards. Oh, he's given the 4th wicket down. Sagar is LBW caught right in front of the stumps. He
was so careful, so cautious. But one good delivery is good enough to send the batter back to the dugout. New batter is Samir Desai, joins in at number 6. Time and again what we see on the ground is the adjustments. Oh, just a bat to it and he gets off the mark very quickly. This is good running between the batters. And the bowlers are absolutely not allowing the batters to settle down. Though it looked like there is a partnership is forming between Sagar and Dr. Sail Sarfraz. But that was taken care of the bowlers, sending Sagar in the form of LBW. Brilliant drive on the half volley, should be too easy. Yes, it will be. Oh, given! Sarfraz is out as well, LBW. The finger points are towards the skywards. This is the 5th wicket down of the Hustlers. It is unbelievable. Oh, the quick fall of the wickets will put the team into troubles. And definitely the ship is sailing in the troubled waters. Very disappointed, dejected and unable to believe Sarfraz that has been seen in his body language. Maybe the ball would have hit the leg stump as from the position of the umpire. As the ball hit his left leg, left pad. And the chances are bright when the ball is hitting the right pad. Umpire knows the best and comes up with the decision. And it is the 5th wicket down of Hustlers on 57. Mahesh joins in at number 7.
Apurva Bhemre has been brought into the bowling proceedings from the 8th over, from the 9th over, end of 8:57 for 5. The complete all-rounder for the Kings is Apurva Bhemre. He's a good batter, good bowler, fantastic on the field. Way outside the leg stump, that should be wide, in comes the signal. With this extra, the score is 58. A drive straight back to the bowler. No chance of a run. Once again, both the two batters are new. Mahesh and Samir. A good hit inside edge, and this could have been a trouble. The ball had to be in the direction of the wicket keeper, but Yogesh realizes very late. It's a striking batter, left his crease for a single. That could have been a mix-up, and that would have been a suicidal. As the Hustlers are not in a position to lose any more wickets. If they do, the team will definitely come into trouble. They're 5 down now. Half the team has gone back to the pavilion. On just a total of nearing 60. That is 58. They are completing the half journey of the runs, Hustlers. In most 60 to 68. Exactly 70 runs needed now. As the score is 58, exactly 70 runs needed. Come on, boys! A good drive on the front. Oh, excellent piece of work there by Yogesh. Brilliant on the field. One-handed pick up and throw. Great effort, absolutely. Oh, just giving himself a bit of a room and wide signal. That was a quick delivery from Apurva. And not in the line. 9th over which is in progress, and score remains unshaken. On 61, of course, with the extras are definitely helping the batters. Once again slightly shuffled across, and back-to-back wides. 62 on the board. With this extra, the batters are gaining some confidence. Oh, brilliant dive there, but the ball has gone past. Could be a couple of runs here. There is a backup fielder.
Yes, 2 runs will be easy picking up here for the batters. With the help of these two, the score has gone up to 64 runs. Come on, boys, come on. And that has marked the end of 9 overs. 64 for 5. Vinay Sambari. The last over before the drinks, it means the 10-1 score is 64. And once again, as we can see, a lot of adjustment in the field. The wicketkeeper has become the fielding captain. He's like a traffic policeman. He's just adjusting the field. Slightly deeper gully, point, deep sweeper cover and mid off. The ball kept low, a little bit of bat on that. The ball is racing away. Should be a boundary, and yes, it will be after a long time for the Hustlers. Too good, bhaiya, too A good. much needed boundary. In spite of the fact that the ball kept low, Too good, but the bhaiya. batter read the line and length. Good hands to the ball. Good extension of hands. They need to strike in this manner. Keep taking score in the form of singles, twos, boundaries. Will be a good batting from the batters. Off flighted delivery, but once again not in line. Pays the price in the form of extra delivery and extra run. Lovely, One bhaiya. defensive drive. Ulon kya? Still they need to contribute 59 runs to win, to get to the target of 128. Lower full toss, the drive, that should have been hit with full power, Come on, boys. but maybe slightly cautious because of the fall of the wickets. Altogether 5. Oh, short of length this time. He was successful in finding the gap. Samir Desai and Mahesh. With every single run, they'll be closing in towards the target of 128 now. 58 runs needed. Still a long way to go. But how they will have the journey, which is full of troubled waters. It all depends on the batters, how they bail the team out of the crisis, how they apply themselves on the crease and comes out with the flying colors. Just wanted to chip in. Come on, Samir, don't worry. Go. Please be ready for the drinks break after this delivery. Oh, no run. No. So end of 10 overs. Going at the rate of 7 runs exactly like the Kings. It's 70 for 5 and it's a strategic timeout and drinks break.
ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। Drive on the back foot, but straight to the fielder. Should be a couple of runs here. Yes, they go for two. Brilliant between the wickets. येऊन अशा येऊन पळून गेला दोघी कामार करा. After the fall of the 5 wickets, these two are once again regaining that confidence and forming a partnership, which is so good to see in the crunch situation. Good fight back from Hustlers. Slow one, well bowled. Beaten the batter, all ends up. A lovely drive. Once again, should be too easy here. दोन येतात दोन इझी येतात. Glorious cover drive that was from the batter. लवली भैया. Picking up 2 time and again. Or slightly frustrating the bowlers and the fielders. This is exactly the banner the batter should bat. And they're doing the right job at the right time. Look at a lot of fielders in the offside now to stop those singles and twos. How important every single run is here, which will decide between a win and a lose. Just chipping in but straight to the fielder. So that's the reason why it was a lot of change in the fielding, especially in the covers, to stop those singles. Oh, nicely done, the risky work. Because the batter has seen a lot of fielders in the offside, and that's the reason why he intentionally played in the fine leg region.
Beautifully worked for a single there. Both the batters are gelling well for the moment. Good call, good coordination, good running between the wickets. It all is happening good for the team Hustlers. So end of 11 overs is 76 for 5. From the other end, it's once again Vinay Sambari into the bowling proceedings from Rajesh Godge Pavilion and to begin the 12th over. On the front, a little bit of bat on that. A single to take the score to 77. The constant rechange of the fielder is the reason left hand, right hand combination. Oh, the ball is up and the fielder underneath it. He will not get to it and the ball will... ball has rolled over. It's a boundary. Good effort there from the fielder, but didn't quite reach the ball and could not pull it back. He failed in both the attempts, but it was a good try. Full marks to the fielder. It wasn't a good timing at all, but still got a boundary for the batter. Straight to Apurva Bhemre towards the long on. Come on, Sam. Ball, boy, and get. Ek to nahi honi. Oh, the ball is up and it should be an easy take for Yogesh. And oh, he tried his best. Just a lucky survival here for Samir Desai. Catch is gone down. The match should not. Good fielding by wants to be a Virat Kohli. It doesn't matter if he becomes black. Deft touch for a single. Lovely, lovely. These fumbles will definitely make things easy for the batters, and that was a slight fumble there from the short third man fielder. So 12 hours gone by, it's 84 for the loss of 5. आप देख सकते हैं रिद्धिश एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा लड़का, काला होने से नहीं डरता, मगर विराट कोहली बनना चाहता है जब वो बड़ा होगा. मुझे लगता है कि शायद विराट कोहली उसका फेवरेट खिलाड़ी है. उनका फेवरेट नंबर 333 333. यहाँ पर अपूर्व ने बिल्कुल जादू के साथ थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है रिद्धीश को.
फिर सोचते रह गए कि पिछवाड़े से गेंद कैसे निकली है रिद्धेश। तो 13वें ओवर की शुरुआत राजेश को लगा है गेंदबाजी में। और बिल्कुल ब्लॉक होल में गेंद, मगर ड्राइव के साथ गेंद जाएगी अपूर्वा के पास जो कि तैनात है लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। धीरे धीरे इक्का दुक्का रन के साथ फिर से एक बार बल्लेबाजी की शुरुआत जो कि देखी जा रही है हर एक ओवर में, और धीरे धीरे स्कोर भी बढ़ता हुआ 86 पर जा पहुंचा है 86, जबकि 128 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है टीम हसलर्स। जबकि टॉस जीतकर हसलर्स ने पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया, अब पहले बल्लेबाजी करते हुए 127 पर सिमट गई थी टीम किंग्स की। सुंदर गेंदबाजी के साथ 2 ओवरों में 2 विकेट की सफलता दिलाई थी अपनी टीम को। राजेश की गेंदबाजी, कुछ बातचीत होती हुई दोनों ही बल्लेबाजों में, एक अच्छी रणनीति गेम प्लान के साथ सूझबूझ की बल्लेबाजी। वो कड़ा प्रहार करना चाह रहे थे मगर काफी तेज गति से आई गेंद। एक अच्छा वेरिएशन भी जो कि देखने को मिलता हुआ राजेश की गेंदबाजी में। इस बार कड़ा प्रहार और निश्चित तौर पर गेंद जाएगी 4 रनों के लिए। दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से पकड़ बनाई थी बिल्कुल लाजवाब, और जैसे गेंद निकली बल्ले से लिखा था उस पर 4 रन। इसे कहते हैं टाइमिंग। तो टाइमिंग की एक बेहतरीन मिसाल यहां पर पेश करते हुए बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बैटिंग सेंसेशन समीर देसाई। और इस बार गेंद हवा में मगर जानबूझकर खेला है उस ओर। जानते हैं कि वहां पर खिलाड़ी काफी दूर यानी कि बिल्कुल सीमा रेखा पर खड़ा है अपूर्व भेमरे। चौकी के बाद एक सिंगल सेंसिबल, इसको 90 पर पहुंचता हुआ 90। 38 रनों की आवश्यकता, 38 मोर रन्स टू विन। संभलकर हाना होता है इसे बीच, यहां पर ये सुसाइडल, कोई कॉल नहीं था, दौड़ पड़े महेश। इस प्रकार से रनआउट के साथ ये जोड़ी टूटती हुई। बिल्कुल गेंद गई थी फील्डर के पास, और ये एक राहत की सांस लेने वाला रनआउट रहेगा टीम किंग्स के लिए। जो जोड़ी काफी खतरनाक साबित हो रही थी, आखिरकार उस जोड़ी को कामयाब तोड़ने में कामयाबी मिलती हुई टीम किंग्स को। तो एक बेहतरीन बल्लेबाज समीर देसाई के विकेट का अंत होता हुआ संतोष लोटलीकर मैदान पर उतरते हुए बल्लेबाजी के लिए, जो कि 8वें नंबर पर। अभी भी 38 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए, जबकि 42 गेंदों में 42 बॉल्स 38 रन्स, लगभग रन बॉल की स्थिति। मगर गेंदबाजी में बदलाव योगेश नाइक को लाया गया है गेंदबाजी के क्रम में, जो कि शुरुआत करेंगे 14वीं ओवर की, और उनका सामना करेंगे महेश।
थोड़ी सी वार्म अप के साथ तैयार हैं योगेश गेंदबाजी के लिए। 14वीं ओवर की शुरुआत, स्कोर हुआ है 90, 6 विकेट के नुकसान पर। 42 गेंदें, 38 रन। फिर से एक बार ड्राइव बढ़िया, मगर अपूर्व की ओर गेंद भेजी गई है 1 रन के लिए। 10 रन, ऐसे ही 10 रन। तो बिल्कुल अगर बल्लेबाज हर एक गेंद के साथ एक एक रन भी बनाते हैं तब भी पहुंच सकते हैं लक्ष्य तक। ओ बिल्कुल ब्लॉक होल में अच्छी वेरिएशन वहां पर योगेश के। फुल राउंड गेंद बिल्कुल ब्लॉक होल में डालने की कोशिश। अक्सर गेंदबाज एक लीथल वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं यॉर्कर लाइन, यानी कि बिल्कुल पैरों में। ओ बल्ले का बाहरी किनारा लगा और डाइव लगाकर गेंद को रोकने में कामयाब शॉट थर्ड मैन फील्डर। बढ़िया प्रयास वहां पर। 1 रन के साथ स्कोर 92 पर पहुंचता हुआ 92। मगर रिद्धीश की मेहनत मैदान के बाहर बिल्कुल जारी है। खोद निकाला है गेंद को, जबकि गेंद फिर से एक बार थी बिल्कुल ब्लॉक होल में। फील्डिंग भी उतनी बेहतरीन होती हुई, यानी कि जानते हैं कि हर एक रन को बचाना काफी जरूरी किंग्स के फील्डर्स। योगेश बल्लेबाजों को कुछ समय नहीं दे रहे हैं, ये दूसरी मर्तबा हुआ इस प्रकार। ओ फुल टॉस, गेंद हवा में, कोई इशारा नहीं है। जब तक गेंद को समेट कर थ्रो किया जाएगा लगता है 3 रन बना लेंगे। हालांकि तीसरा रन सरफराज ने बनाया है डगआउट से, जबकि 2 रनों पर संभल गए थे बल्लेबाज। 3 रन के साथ अब तेजी से स्कोर 97 पर पहुंचता हुआ, जबकि अभी 3 रन बनाएंगे तो 100 रन पर पहुंच जाएंगी टीम हसलर्स। License to kill. काफी बिल्कुल आक्रामक रवैया अपनाते हुए बल्लेबाज संतोष, थोड़े से सेंटी होते हुए, और उनके टी शर्ट पे भी लिखा है सेंटी, यानी कि जज्बाती है। इस बार संपर्क, मगर सुंदर फील्डिंग अपनी गेंदबाजी पर। 14 ओवर की समाप्ति, 97 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। रिद्धीश की लगातार मेहनत यहां पर, मगर बल्ला लेकर बल्लेबाजी भी करनी होगी रिद्धीश को। केवल कैचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो रिद्धीश अब अपना बल्ला ढूंढने के लिए नेट्स में गए हैं कि कहां है मेरा बैट। तो हंसी हंसी मजाक होती रहेगी, तो गेंदबाजी में फिर से एक बार अप्रूवल गेंदबाज अपूर्व को लाया गया है, जो कि शुरुआत करेंगे 15वीं ओवर के।
वो बैकफुट पर ड्राइव, 2 रन की रहेगी कोशिश या फिर गेंद जाएगी 4 रनों के लिए, चली गई है गेंद 4 रनों के लिए। सुंदर टाइमिंग से पर ड्राइव, इनसाइड आउट का प्रयोग। अब जब गेंद निकली है बल्ले के बीचों बीच से तो यह नजारा बिल्कुल देखने को मिलेगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस देगा बल्लेबाज को। टाइमिंग का यहां पर जिक्र होना जरूरी है। क्या टाइमिंग थे, इसे कहते हैं क्रिकेट में टाइमिंग, एफर्टलेस ड्राइव। 100 का आंकड़ा पार करती हुई टीम हसलर्स, इट्स 100 अप फॉर देम, 101। अब केवल 27 रनों की आवश्यकता, 27 रन्स वो दे नीड मोर टू विन। वहां पर अब एक खिलाड़ी तैनात, पैंतीस गेंदें 27 रन। अक्रॉस द बैट खेलने की कोशिश मगर नाकामयाब। महेश उनके साथ, संतोष 9 रन पर। गेंदबाजी में अपूर्व, आगे पीछे होते हुए बल्लेबाज मगर इसी बीच फिर से एक बार ड्राइव 1 रन के लिए। वो बढ़िया ड्राइव है मगर ये देखिए कोई फील्डर रोके ना रोके मगर नॉर्थ साइकर ने जरूर रोका है गेंद को। गेंद इतनी जोर से लगी है पैर पर, स्प्रे लेके जाना जरूरी है। मगर कहते हुए महेश, मर्द को दर्द नहीं होता, ये जज्बा उनका क्रीज पर। एक बहादुर बल्लेबाज। ओ सुंदर गेंदबाजी, ये देखिए प्रतिक्रिया पूर्व की, कितना करीबी मामला था ये। एक 103 पर 6। कदमों का इस्तेमाल इस बार लोअर फुल टॉस पे डाइव लगाकर फील्डिंग, यहां पर मुश्किल में आ सकते थे संतोष, किले गाड़ कर खड़े थे संतोष। ओवर की समाप्ति 15, 104, 6 विकेट के नुकसान पर। स्कोर हुआ 104। यहां पर गेंदबाजों को करना होगा सोच विचार, क्योंकि अब केवल 24 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए 30 गेंदों में।
योगेश की गेंदबाजी इसी बीच बिल्कुल सुंदर ड्राइव, 2 रन की कोशिश यहां पर रहेगी, मगर जानते हैं कि अपूर्व भेम्रे काफी तेज और एक बेहतरीन फील्डर है, कोई जोखिम उठाना मुनासिब नहीं समझा। बल्लेबाजों ने केवल 1 रन पर सिमट गए हैं और स्कोर को पहुंचाया 105 रनों पर। ओ बढ़िया शॉट, इस बार वहां पर गोली की रफ्तार से गेंद गई है 4 रनों के लिए। एक 109 रन पर पहुंचे काफी तेजी से। फिर से एक बार बढ़िया टाइमिंग, इस बार संतोष के बल्ले से निकलता हुआ यह शानदार चौका। हालांकि योगेश अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, मगर थोड़ी सी फुलर ऑन गेंद थी, हाफ वॉली पर बढ़िया शॉट। ओ इस बार फुल टॉस गेंद, मौका था, दस्तूर था, बल्लेबाज ने दोनों खोया। तो इस बार कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाने वाला शॉट हो गया। खेलना चाह रहे थे लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद गई है शायद थर्ड बेन क्षेत्र में। It doesn't matter how the run comes, what matters is runs. महेश स्ट्राइक पर। एक रन आसानी के साथ मिलेगा और स्कोर को पहुंचाया नेल्सन पर 1-1-1। डेविड शेपर्ड नामक अंपायर एक पैर पे खड़े हो जाते थे जब स्कोर होता 1-1-1, यानी कि नेल्सन फिगर। ड्राइव इसे बीच, मगर कोई रन का मौका नहीं मिलेगा बल्लेबाजों को। एक अच्छी कमबैक यहां पर योगेश द्वारा और एक ओवर का समाप्त, 16वीं ओवर समाप्त, स्कोर 111, 6 विकेट के नुकसान पर। इस बार गेंद हवा में, मगर वहां पर खिलाड़ी तैनात था, शायद केवल एक ही रन मिलेगा बल्लेबाजों को इतनी बेहतरीन शॉट के साथ। 31 पर महेश इज ऑन 31 हिज इंडिविजुअल स्कोर, उनका निजी स्कोर, जबकि अब केवल 4 रन ज्यादा बना सकते हैं। ओ बढ़िया ड्राइव, सही पकड़ बनाई है, मगर उतनी ही सुंदर फील्डिंग वहां पर।
17वीं ओवर, अपूर्व है गेंदबाज। पंद्रह रनों की आवश्यकता, 15 रन्स। ओ इस बार गेंद गई है बिल्कुल 4 रन के लिए कोशिश की वहां पर फील्डर ने, मगर गेंद को नहीं रोक पाएंगे। अब केवल 11 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए हसलस। और इसी के साथ महेश जो कि लौटेंगे। एज पर द रूल 35 रन्स व्हाट अ मैक्सिमम बैटर कैन स्कोर, या फिर 34 पर बड़ा शॉट लगा सकते थे, मगर महेश ने 31 पर ही लगाया है बड़ा शॉट 4 रनों के लिए। जितेंद्र जीतू बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरते रहे और रिद्धेश उन्हें शुभकामनाएं देते हुए ऑल द बेस्ट। अपने पिताजी के लिए ऑल द बेस्ट डैड कहते हुए रिद्धेश। महेश ने शानदार पारी खेली है और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट छुपाई नहीं छुपती। ये देखिए खिल उठी है मुस्कुराहट, बिल्कुल वेल प्लेड महेश, वंडरफुल इनिंग। तो फाइनल मैच के लिए टीम का आरंभ हो रहा है। एक एक कर फिर खिलाड़ी यहां पर उतरते हुए मैदान पर। जितेंद्र स्ट्राइक पर, अपूर्व द्वारा थोड़ी सी एडजस्टमेंट, बदलाव फील्डिंग में भी। एक रन आसानी के साथ मिलेगा और इस एक रन के साथ अपना खाता खोला जीतू ने। दर्शकों को बता दो फिर से एक बार, मरगांव क्रिकेट क्लब द्वारा लेट फर्डिनेंड कोएल्हो मेमोरियल टूर्नामेंट है जो कि वेटरन्स मेंबर्स लीग के लिए खास तौर पर रखा गया है। गेंद हवा में, कैच का मौका आसान सा हो सकता है, मगर सभी खिलाड़ी एक दूसरे की ओर देखते हुए, तो धीरे धीरे मैच बिल्कुल हाथों से निकलती हुई किंग्स के 17 ओवरों की समाप्ति 119 रन 7 विकेट के नुकसान पर। बूम बूम बख्शी का भी आगमन हो चुका है। खतरनाक बल्लेबाज, हाल ही में दुबई जाकर काफी सारी प्रैक्टिस लेकर आए हैं, क्योंकि उस खिलाड़ी को कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, मगर लंबे छक्के लगातार किस तरह से लगाएं इसकी ट्रेनिंग जरूर ली है बख्शी ने। टीम के जावेद मियादाद यानी कि संदीप दलाल भी आ चुके हैं पवेलियन में। गेंद हवा में, इस बार कम से कम 2 रन मिलेंगे या फिर गेंद लुढ़क जाएगी। 4 रनों के लिए देखना होगा, 2 रन, जबकि हर एक 2 गेंदों में 1 रन की आवश्यकता है और बल्लेबाज 1 रन में 2 रन बनाते हुए। सात रन की आवश्यकता, स्कोर हुआ 121। 17 गेंदों में 7 रन। ओ इस बार बिल्कुल बल्ले का
बाहरी किनारा लगा, फिर से एक बार 2 रन की कोशिश। यहां पर दौड़ पड़े हैं संतोष, उनका साथ निभाते हुए जितेंद्र गांवकर। बढ़िया रन चेस, सुंदर रन चेस होता हुआ हसलर्स की ओर से। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 127 पर ऑल आउट किया किंग्स को। अब 128 का पीछा करते हुए केवल 5 रन की आवश्यकता। और समल का ड्राइव, उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग अपनी गेंदबाजी पर। पंद्रह गेंदें, 5 रनों की आवश्यकता। अपील वहां पर होते हुए एलबीडब्ल्यू के लिए। जबकि 17 गेंदों में 7 चाहिए थे, आप 15 गेंदों में 5, 14 गेंदों में 4, 13 में 3, 12 में 2, 11 में 1, और लगता है 10 गेंदों से जीत जाएगी ये टीम। बढ़िया ड्राइव लॉन्ग ऑन के, और वहां पर राजेश तैनात। सुंदर फील्डिंग का मुजाहिरा। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 124 पे। और संभवतः रहेगी ये आखिरी गेंद, जो कि 18वें ओवर की। लगता है बल्ले से लगा है और फाइनली की ओर गेंद को रोका गया। क्रिकेट के मैदान पर थोड़ा सा फुटबॉल का नजारा दिखाई देता हुआ। केवल 2 रन की आवश्यकता, जस्ट 2 रन्स। ये देखिए, बिल्कुल 13 गेंदों में 2 रन। और लगता है एबी डिविलियर्स आ गए थे उनमें, और ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 127 और 1 रन की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। बारह गेंदों में केवल 1 रन। जबकि संतोष 15 रन पर बल्लेबाजी करते हुए और जितेंद्र 1 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभाते हुए क्रीज पर। तो केवल 1 रन दूर जीत से हसलर्स, जो कि तीसरे नंबर पर टीम रहेगी हसलर्स के, और चौथे पर रहेंगे द किंग्स। तो ये बिल्कुल विनिंग शॉट। कांग्रेचुलेशंस हसलर्स, और ढेर सारी शुभकामनाएं। तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी है टीम, जबकि द किंग्स चौथे नंबर पर। तो पहले मैच का समापन इस रन के साथ हुआ है। आसानी के साथ 128 रन बना लिए टीम हसलर्स ने, जबकि 7 विकेट खोकर, मगर एक अच्छी फाइट बैक किंग्स ने जरूर दी है टीम हसलर्स को। तो तीसरे नंबर पर हसलर्स और चौथे नंबर पर है द किंग्स। पहले और दूसरे नंबर पर कौन सी टीमें रहेंगी, उसका मुकाबला होगा लंच ब्रेक के बाद, होगा बड़ा फाइनल्स। उस फाइनल्स के लिए उन दोनों ही टीमों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आपसे अब मैं थोड़े समय के लिए ब्रेक लेता हूं, फिर से आपके साथ जुड़ूंगा। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि बड़ा मैच कुछ ही क्षणों में द फाइनल्स का मुकाबला होने वाला है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।
baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown. See, this prize distribution we do it here only. This man of the match. The final will be there. I have to mention this also, no? No. Yeah, this you mentioned first. This will be for the toss. These two will be for the toss. Now only first Sudesh Pise will. These two will go for the toss. Yeah. This will be coming for the second match. Okay. These two will be in the second match. When before the second match toss and this thing, introduction, that time these two people will be there. And now Sudesh Pise will be calling Srikanth will be there. Requesting the Vice President of Margao Cricket Club, Sudesh Bishe sir, to please escort Shrikant Vajinka, who's a special guest here, to give away the man of the match. And first of all, requesting both the team captains to please come and have a word before we could start off with the presentation. First of all, I would like to call upon the captain of the Kings. If you can please come and have a word. Yes, requesting MCC Vice President Sudesh Biche sir to please escort the special guest Shrikant Vijinka sir, who will be giving away the man of the match. And before, there is always a formality to be given, a token of love, which is so beautiful. Would like to request Sudesh Biche sir to please present the token of love and memento to special guest Shrikant Vajinka sir for this Margao Cricket Club late Ferdinand Coelho Memorial Veteran Members League match. Presenting the memento to Sir Shrikant Vajinka from the Vice President of MCC, Sudesh Biche sir.
Thank you so much, sir. And now requesting the captain of Kings to please come up and have a word. Kings captain, and also requesting the captain of Hustlers. Rasik Paikot, the captain of the Kings. So 128 was 127 was not a good score to keep as a defense score, but at least 20-25 runs should have been more to defend. 145 to 150 as the start was given. Apart from the 2 wickets fall, the team with the help of you regained the control on the batting, and 20-25 runs more would have been much better to defend. Yeah, 140 to 145 would have been better score compared to 128. But our boys did very well to control first 5 wickets for 53. Then some here and there, it's a part of the game. But we tried our best, our boys tried. Absolutely, you tried, and all the best for you for the future matches to come. Thank you, sir. Now the captain of the winning team, the Hustlers, Balkrishna sir, 128 was easy but still tough. In spite of losing 7 wickets, the boys somehow managed to get to the target of 128. Actually, everything went according to our plan. We had planned, in fact, we had planned initially that we'll try and restrict them to 120, plus minus 10, 15 here and there. And it worked, and we could restrict them in 127. But small targets are not that easy also at the same time. So I had told this you play well, play safely, and we'll try to achieve the target in almost 15-16 overs. And that's what we did. Absolutely, in spite of the 5 wickets down, the team regained once again the partnership, and the boys have done a fantastic job. Congratulations for being number 3 in the tournament's list. Thank you for talking to us, Balkrishna Hodarkar. And now for the man of the match, the hero of the match, who scored 35 runs in 29 balls and picked up 1 wicket. Any guesses? It's Mahesh Kurchatkar. Receiving the prize in the hands of the special guest, Shrikant Vajjinkar sir. Well done, Mahesh Kurchatkar. My sir, it's always feels happy to be a hero of the team. Well, it's not being a hero or a zero. It's cricket. The Well, in cricket there is no hero, no zero. The day one plays well, it's his day. It's great that we all are playing and enjoying the game. What is more important is enjoying cricket. Thank you. Absolutely well said, and a big round of applause for the hero, Mahesh Kurchatkar, scored 35 and 29 runs. Requesting Shrikant sir to please say a few words. It was nice watching this match. Actually, got to see a lot of display of good sporting spirit, good batting, fielding, bowling. Moreover, somehow I could not make out it was a veterans tournament. I don't know. It didn't look like a veterans tournament. It looked like a normal. Anyway, congratulations to the winning as well as the losing team for both playing well, and of course a special congratulations to the winning team for making it. Yeah. All the best for the finals. Thank you. Thank you sir for your time and your kind words, and that's all from the presentation. See you back in the final match.